I have a text and I have a pattern. Let's say the pattern is A B A C. Okay, and here we have a text of A B A B C B A. Let's say this is the pattern, or this is a text in which we have to search the pattern. So now what we were doing here, we were choosing this, and then we were comparing this. It was not compared, so we were comparing this one with this. Now, if you see that if we have compared this thing and then this thing is not compared, then we have already matched three A's. So we can just match this one with this because these two A needs to be matched with this two A. They are already matched. We need not to do the same thing, right? If these two A are already matched because we have compared this A and this is also same, then we only need to make sure that, okay, is this equals to this A? No. Yes, it is. Then we will match this. So now again, this is not a match. So now we need to match this and this because these two A are already matched with this two A. So now we will match this. Yes, this is matched. This is matched. This is matched. This is not matched, right? But we have already matched these two A's. So now we need to match this with this. Okay. So because of this B, we need to match this. Otherwise, we would match with something else. But this is already matched, right? So why we are matching it again and again in the naive algorithm? So KMP uses a method of that. What it does is it creates a LPS array. LPS array of pattern. So LPS stands for longest proper prefix, which is also suffix, right? So longest proper prefix, which is also suffix. So what happens is that when we are actually, what is proper prefix? First, we should know this. Let's say I have uh, an array ABC. So all the prefixes of this array is empty, A, AB, and ABC. These are all the prefixes of this string, right? Now, proper prefix is these three, not the this string itself, except the string whatever, except the string itself, whatever uh, the prefixes are, they are proper prefix. So we have to find the longest proper prefix, which is also suffix. So how do we do that? Let's start with this array a B, A, C. So first we will create a array. So 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Now the first one will always be 0 because there is no prefix of A, right? A's proper prefixes, A's proper prefix is empty. Those length of the proper prefix is 0. Okay, length of the prefix which is also suffix is 0. Now next is AA. So AA has actually two prefixes, two proper prefix. One is empty and one is single A. Now which one of what is the maximum length of the uh, proper prefix which is also a suffix here? This one. So this will be 1, right? Okay. Now next is AAA. Now we are here. AAA. Proper prefixes are empty, single A, and double A. Now what is the length of the longest prefix which is also suffix here? So AA is a prefix also and it is also suffix here. So the length is 2. Okay. Next is AAAB. What is the proper prefixes? Empty, A, AA, and AAA. And what is the length of longest prefix, proper prefix, which is also suffix? Is this a suffix here? No, it is not a suffix because it ends with B. So this is not ending with B. Is this a suffix here? No. Is this a suffix here? No. Is this a suffix? Yes, because empty is always a suffix. So this will become 0. Okay. So next is AAABA. Again, empty, A, AA,
AAA, and AAAB. Now let's see. Is this a suffix here? No, this is not a suffix, right? AABA, and this is AAB. So this is not a suffix. Triple A is a suffix. ABA is the last three letters, so this is also not a suffix. Double A, is this a suffix? Last two letters are BA, so this is also not a suffix. A is a suffix. Yes, A is a suffix. So this longest length is 1. So answer is 1 here. Okay. Next is AAA, BAA. Empty. A, AAA, AAA, AAAB, AAABA. Right. Now, is this a suffix here? No, this is not a suffix. Last 1, 2, 3, 4, 5 are 1, 2, 3, 4, 5. AABAA. So this is not a suffix. This is also not a suffix. This is also not a suffix. This is a suffix. AA is a suffix. So length of longest suffix is 2. So we have 2 here. Now again at C we will get 0. We can see that. You can create all the prefixes and you will see that the proper prefix length is 0. So this is how it is made. Okay. So let's make a new one. Let's create AAB, AAB, AAC, A. Make the LPS array of this. So LPS array length will be same. So this is 10. So we will have 10 length array 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So this is so fill it. First will always be 0. So fill this and raise your hand. Yes, anyone who is able to solve it, raise your hand. Shubham, I am allowing you the mic.
Okay, mic is allowed. Now tell me, how did you solve this? Yes, sir. For the equivalent would be 0, First is 0, second is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. 4. I think it should be 0. So it's 4, 4. Right. 4, yes, 5. and then 5, 0, and Yeah, 1. 0 and 1. Good. Very good. Yes, exactly correct. So what happens is first we get A, which is already 0, then we get A. So it will be empty. One is empty, one is A. So A is also a suffix here, so it becomes 1. Next we get B, so we added AA also. AA is not a suffix, so we get 0 here. Next we get A, so we get AAB also. AAB not here, AA not here, A is here as a suffix, so we get 1. Now next we get A also, this A also, so we will add AABA. So AABA not here, AAB not here as a suffix. AA is here as suffix, so we get 2. Next we get B, right? We were here. This represents this represents this. So we have B, so we will add AA. We are only adding proper prefix. Is this a suffix here? No. Is this a suffix here? No. Is this a suffix? Yes, this is a suffix here. So we add 3. 3 is the length of the longest suffix. Now we get again A. So we add AAB. Okay. So now is this a suffix here? No. Is this a suffix here? AABA. No. Is this a suffix here? Yes. AABA. 4. So we get 4 here. Okay. Next, again, we will add an A. So we will get AABA. Is this a suffix here? No. Is this a suffix here? No. Is this a suffix here? AABAA? Yes. AABAA is a suffix. So we get 5. Now we add C. So we get AABAA. Is this a suffix? No. This a suffix? No. And yes. So we get 0 here. And next we add A. So we get this A as a single suffix. So we get this. So this is how these suffixes are done. Okay. So this is not a exact method how we are going to do it programmatically. But yeah, you get the idea how this LPS array is formed. Yes or no? Give me a thumbs up. If no, then raise your hand and ask the question. If yes, good. If you are not getting it, raise your hand. Okay. Deepak Singh, let me give you a mic access. Okay, Deepak, tell me. सर ये सफिक्स वाले पार्ट में हम वापस वापस 1 2 और कैसे हो जा रहे हैं? बेटा कौन से वाला है कि स्पेसिफिक बोले हो और तब बताऊंगा। एक स्पेसिफिक इसकी सब स्ट्रिंग लो। सर मैं पूरा एक्सप्लेन कर देना है फिर से वाला पार्ट। बेटा पूरा एक्सप्लेन करने का क्या मतलब होता है? चलो करता हूँ फिर भी कोशिश। भाई देखो, प्रॉपर प्रीफिक्स समझ आ गया तो मैं यस और नो यस सर। बोल। हाँ, माइक ऑन रखना, ठीक है। अब मान लो मैंने स्टार्ट किया, मैं एक एक छोटी छोटी एरे लूंगा। ये ए का तो 0 आ जाएगा, तो मैं डबल ए से स्टार्ट करूंगा। डबल ए के प्रॉपर प्रीफिक्सेस क्या होंगे? एम्प्टी और एम्प्टी। ए यस सर। एंड एम्प्टी, ठीक है। अब मुझे लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आऊंगा। लॉन्गेस्ट है ए। ए का साइज है 1। क्या ये ए एज अ सफिक्स है ये यहाँ पर? हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। ओके सर। नेक्स्ट आया ए ए बी। यहाँ पे आया ए ए बी। अब देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया ए ए बी। तो ए ए बी के प्रॉपर प्रीफिक्सेस क्या आएंगे? एम्प्टी, ए और डबल ए। अब फिर लॉन्गेस्ट से स्मॉलेस्ट आऊंगा। क्या डबल ए यहाँ पे सफिक्स है? नहीं। क्या ए यहाँ पे सफिक्स है? नहीं क्या एम्प्टी यहाँ सफिक्स है? एम्प्टी तो हो गई, तो 0। होगा। तो एम्प्टी की लेंथ क्या है? 0। तो 0 इज द लॉन्गेस्ट सफिक्स। अब ये वाले 1 को भी लेते हैं, ए आ गया। तो हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दी, ए ए बी। अब क्या ये ए ए बी यहाँ पे सफिक्स है?
नहीं। ए बी ए है ना सफिक्स, तो तीन हाँ। लेंथ की सफिक्स है ए बी ए, और ये ए बी तो ये नहीं है। क्या ये ए यहाँ पे सफिक्स है? नहीं। दो लेंथ की सफिक्स है बी ए और ये ए नहीं है। क्या ये ए यहाँ सफिक्स है? हाँ। तो इसलिए यहाँ पे वन आ गया। ओके सर, समझ गया। ऐसे ही सबका बनाते जा रहे हैं हम। ये मैं तुम्हें समझाया है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस array is formed. We are not going to do it like this. When we are doing coding, we are not going to do it like this, but I needed to make you understand how this array is formed, because जहाँ पे भी आप online जाओगे ना, if you go online and if you search, you won't understand, because they are directly telling you कि इसका suffix उठा लो, उसका prefix उठा लो, and they are directly telling you कि ये किस तरीके से काम करेगा, राइट right? तो अगर आप सीधा उसके कोड पे जंप करोगे, यू वोंट अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रीफिक्स इज बीइंग मेड, हाउ दिस एलपीएस array इज बीइंग मेड, राइट? दीपक, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, आ गया समझ में। पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, सो म्यूट कर लो आप। थैंक यू। हाँ, सो at that moment of time you won't understand कि how this is working, how this is not working, so that is why I'm telling you कि यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी आर मेकिंग इट, राइट? नाउ हाउ आई विल डू इट इन प्रोग्रामिंग। तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना, ए बी, ए बी, ए सी, यही था ना, और ए। अब ध्यान से देखना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे इसके ऊपर ही लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने नीचे एरे लिख दिए सारे, ताकि हमें ध्यान रहे। नाउ फर्स्ट विल ऑलवेज बी 0। और अब हमारे दो वेरिएबल्स होंगे, मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, लेंथ इक्वल्स टू 0 एंड आई इक्वल्स टू 1। नाउ वी आर गोइंग टू चेक, इज लेंथ इक्वल्स टू इज, इसको ले लेते हैं एलपीएस, ठीक है? इसको ले लेते हैं पैटर्न। इज पैटर्न लेंथ इक्वल्स टू पैटर्न आई, यस और नो? इज पैटर्न लेंथ इक्वल्स टू पैटर्न आई, यस? So now what we will do, we will do length plus plus. So length become 1. We'll put LPS of I equals to len and I plus plus. Okay. ध्यान से देखिएगा प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा वो रहेगा, कंफ्यूजन होगी। मैं जब कोड लिखूंगा समझ आ जाएगा, बट अभी कंफ्यूजन होगी। नाउ अभी कैसे कर रहा है वो भी समझ आ जाएगा आपको थोड़ी देर में, जब आप इसे 2-3 बार चलाओगे। नाउ अगेन, इस पैटर्न ऑफ लेन इक्वल्स टू पैटर्न ऑफ आई, पैटर्न ऑफ लेन इक्वल्स टू पैटर्न ऑफ आई, नो। तो हम लेन को अब रिड्यूस करेंगे। अब लेन को क्या कर देंगे, लेन इक्वल्स टू एलपीएस ऑफ लेन माइनस 1 अंटिल लेन बिकम 0। तो लेन माइनस 1 मीन 0, तो एलपीएस ऑफ 0 इज 0, तो लेन बिकम्स 0। अब फिर से चेक करेंगे, क्या इस पैटर्न लेन इक्वल्स टू पैटर्न आई, नो। तो एंड लेन इक्वल्स टू 0, तो इसको हम 0 कर देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। नाउ आई बिकम्स 3। ओके, नाउ अगेन वी विल चेक, is len equals to I, pattern len equals to pattern I, pattern len equals to pattern I, yes. Again len plus plus, pattern of I equal, sorry, pattern of I equals to len and I plus plus. Okay, again I is here, uh, len is here. Is pattern of len equals to pattern of I, yes. Again len plus plus, put LPS of I equals to len and I plus plus. Again, is pattern of len equals to pattern of I, yes. Again len plus plus, LPS of I equals to len I plus plus. Again 6 and 3, 3 and 6, are these equal? Yes, len plus plus, LPS of len equals to this I plus plus. 7 and 4, are these equal? Yes, again len plus plus, LPS of I equals to len I plus plus. 8 and 5, are these equal? No. So len equals to 0, no. So len becomes LPS of len minus 1. So ln is 5. LPS of 5 minus 1 means LPS of 4. LPS of 4 is 2. So this will become 2. 2 and 8. So now you see, we have already matched these two A's, and it is directly asking to match this B with this C. Right? Are these equal? No. These are not equal. Again, len is 0. No. So len equals to LPS of len minus 1.
So LPS of 1 is 1. So this will become 1. Now this A is already matched. Now it is asking to match this C. Are these equal? No. LPS of len minus 1, 0. Are these equal? No. Len equals to 0, so make it 0. Then next time I plus plus. So now 0 and 9. Are these equal? Yes. So len plus plus. LPS of I equals to len. I plus plus. Came out at the end. So now this is my array. And this is the same array that we have formed here. Okay. Now we will run this on this A triple A B AAC. Okay, we will see, are we getting the same array? Triple A B AAC. Zero, one, two, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 0. A B AAC. Okay. Now len equals to 0. I equals to 1. Is len and I equal? Are these equal? Yes. So len plus plus. Put len value here. I plus plus. Is len and I equal? A and A is equal. Len plus plus. Put len value here. I plus plus. Is len and I equal? No. So put len equals to LPS of len minus 1. LPS of len minus 1 means LPS of 1. LPS of 1 is 1. This will become 1. Is this equal? No. So put LPS of again len minus 1 becomes 0. Are these equal? No. Len equals to 0. Put 0. Make it 4. Is 0 and 4 equal? Yes. Len plus plus. Here I plus plus. Is 1 and 5 equal? Yes. So len plus plus, put len here, I plus plus. Is 2 and 6 equal? No. So LPS of len minus 1, 1. 1 and 6 equal? No. LPS of len minus 1, 0. 0 and 6 equal? No. So make it 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0. Exactly the same thing we are getting. So first we have to construct an LPS array. So we will write the code for that. Build LPS vector int ampersand LPS comma pattern string pattern. I'm assuming that this and this length is equal, and we can pass that length as well. Okay, so LPS of 0 equals to 0. First thing, int len equals to 0, I equals to 1, while I is less than n. We are going, yes. So we are going to check if pattern of len is equal pattern of I. If both are equal, then what we were doing? We were doing len plus plus. LPS of I equals to len and I plus plus. Okay. Else, if this is not equal, then we are going to check if len is not equals to 0. If len is not equals to 0, then len equals to LPS of len minus 1. And we are not going to change I here. Okay. Beware of this, that we are not changing I here because we have to match it with something else. Else, if len is 0, then what we are going to do? LPS of I equals to 0 and I plus plus. Now we are not going to change len here, and this else is done, and that's it. And this while is done, and this is also done. This is how we are going to build the LPS array. Simple as this thing. Few lines of code. We don't need to worry about. Just you need to make sure how the LPS array is formed. Is it okay with everyone? Are you getting what I'm saying?
चलिए. So this is basically how this works. So if you have written, please let me know. Give me a thumbs up. Otherwise, raise your hand and I will give you time to write it. So most of you are giving me a thumbs up. So it means that you have written it. So let's write down the whole code for this. So we are going to write the KMP code now. So KMP code will see, we have two options. One is that we search the string and we return the string we return the first occurrence. But what I'm going to do is I'm going to return all the occurrences of the this. So we are going to write KMP. So we have string ampersand text. Call by reference we can do, but we are not going to do any changes. So we can normally call it also. So now int m equals to text dot length n equals to pattern dot length. Okay, now we are going to create a vector of int of LPS, and the size of this LPS would be n equals to the pattern. Okay, now vector int solution. Okay, this will contain all the starting indexes of the pattern in text. Okay, it can be empty as well. Now we will call build LPS with a LPS pattern and n. So LPS pattern and n. So this will build the LPS array. Now we are going to do two things: I equals to 0, j equals to 0. The same thing which we were doing during the build LPS, we are going to check here as well. So while I is less than m, we are going to do if text I is equal pattern j. So if they both are equal, then we are going to do nothing, I plus plus j plus plus, right? Okay. After this, if if our j reaches end, j equal m. Oh, sorry, not this end, this end. Okay, patterns end. So if j equal n, then we are going to do is we are going to push this as our result. The result likha solution. So we are going to push this as our solution. So solution dot push back. So our starting would have been at a I minus j. So currently I is at some location and we have matched the complete pattern here. So it would have started I minus j. Okay. So we have done this, and because we need to get more such occurrences, so we will do j equals to LPS of j minus 1. Okay. So this is when it is equal, and I think this, and if they are not matching, else we will see if again j is not equals to 0. If j is not equals to 0, then j equals to LPS of j minus 1. Else if j is equals to 0, then we will move on. It means we cannot match it further. So I plus plus, and this loop is over, while loop is over. This is closed, this is closed, while loop is closed. So we can return the result, return the solution. This is how we are going to do the search, KMP search. So this is also simple. We are going to, this was the main thing, was how to develop this thing. Okay, Rishabh Sharma, give me a moment. Rishabh, you have now mic access. Please tell me what's the problem. सॉरी सर वो गलती से हो गया Any doubt? Any questions here? Okay, so write it down. Write this down.
You have written this? The whole code? If you have not, please raise your hand. If you have not written the whole code, please raise your hand. Paras, कहाँ से बचा हुआ है बेटा? पारस म्यूट अनम्यूट करके बता दो कहाँ से बचा है. पारस पंत. बेटा आपकी आवाज नहीं है. एलपीएस पे हूँ. कहाँ पे बेटा? जे इक्वल्स एलपीएस. जे मतलब लास्ट लाइन जो है एलपीएस. अच्छा यहाँ तो इसके बाद भी है बेटा भी तो j equals to LPS j minus 1 and then this else part. Write it down fast. लिख लिया बेटा? सबने लिख लिया? प्लीज गिव मी थम्स अप फास्ट. Okay, good. Now we will start with something called. So, okay, here also it will give you average and best time complexity as order m plus n. But in the worst case, what is the worst case? The worst case is suppose you have to match A, B, C, D, E, F. Now, if you create a LPS array of this, it will be 0, 0, 0, 0, 0, 0.
Now, if you match this thing, you always have to start from 0. Yes, always whatever j is, j will become LPS of j minus 1. So j will become 0. And you always have to start from 0 to whenever you are getting a non-match. So problem will exist. In this worst case, you will get order m into n complexity. Okay, it will be order m into n complexity. Right? You getting my point? So in the worst case, it will still be order m into n, but these worst cases are very few. So always in the best and average case, you are getting a good complexity. Are you getting my point? Give me thumbs up fast. We'll move to some other topic. Yes, okay. So there is some topic called PNP, NP hard, and NP complete. Okay. Now, what is a P problem? What is a NP problem? P stands for polynomial, N stands for non-polynomial. Okay. So, for example, linear search, binary search, insertion sort, bubble sort, quick sort, merge sort, right? These kind of sorts or searching, they are in the category of polynomial. I will tell you how to detect that. Non-polynomial like 0, 1 knapsack. Okay. CNF is also uh, satisfiability. One is subset sum. So these all are non-polynomial. So polynomial means it takes polynomial time to solve them, right? So for example, the linear search is order n, this is log n, this is n square, and log n, and log n, right? Here it is 2 to the power n, 2 to the power n, 2 to the power n. So basically some are n into 2 to the power n, but yeah. So this is exponential. So this is 2 to the power n, right? So now what is P problems? So P problems are those problems which can be solved even if it is an n to the power 100, n to the power anything is n to the power constant is polynomial. Okay. P problems are those problems which can be solved and verified by deterministic algorithm, deterministic algorithm in polynomial time. In polynomial time, right? So if a problem can be solved and can be verified whether the solution is correct or not by a deterministic algorithm. What is a deterministic algorithm? Deterministic algorithm means I know how it works. Non-deterministic means non-deterministic can have some deterministic part as well. Okay. Non-deterministic mean I currently don't know how it works. So basically P, NP, NP complete ये सब क्या है? This is research topic. Okay, so you want a new algorithm, you want to know whether it is P, NP, NP complete, NP hard. So this is how you do. So deterministic algorithm means so I want to store my whatever work I have done, right? So पहले मैं NP problem बता देता हूँ, फिर मैं deterministic पे आता हूँ. तो NP problems are those can be solved and verified by non-deterministic algorithm in P time, in polynomial time, or by deterministic algorithm in non-polynomial time. Right. So basically, verification, so we can do verification, can be verified in P time. So we can verify it in P time. Don't worry about it.
I'll tell you what is deterministic and what is non-deterministic. So let's say I'm writing a linear search, right? तो लीनियर सर्च मुझे अभी पता है, तो दिस इज अ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्निक है, सॉरी नॉट टेक्नोलॉजी, टेक्निक है। तो मैं उसके हर लाइन से वाकिफ हूँ कि क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। अब आते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पे। अगर मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक की बात करूं, तो मान लो किसी को नहीं पता कि लीनियर सर्च कैसे काम करती थी, तो वो क्या करता, वो एक इसकी लिखता सर्च करो एक एरे के अंदर और एक की को सर्च करना है। सो वो यहाँ पे लिखता j इक्वल्स टू सेलेक्ट की इन एरे, तो वो दे देता इफ arr j equals to key, do something like success, okay, else do something for failure that it is not found. Okay, so now what is this select? This select is a magic. जो चीज हमें नहीं पता कैसे काम करती है वो हमारे लिए मैजिक होता है। ठीक है, जादू जादू यही होता है। जब पहले के जमाने में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू ओल्ड टाइम और वहां पे ऑटोमेटिक डोर लगा दो, तो उनके लिए जादू होगा, बंदा आ रहा है, दरवाजा खुल जा रहा है, दिस इज द मैजिक, राइट। आज के टाइम पे वो टेक्नोलॉजी है कि आप आ रहे हो तो आपको आईआर सेंसर सेंस करता है और गेट खोल देता है, दैट इज अ टेक्नोलॉजी राइट नाउ। ओके, तो दिस इज अ टेक्निक। सो राइट नाउ लीनियर सर्च इज अ टेक्निक, बट ये क्या है, ये जादू है। दिस इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। टू प्रिजर्व माई वर्क आई हैव सेड कि ओके इन फ्यूचर someone can develop a select method which can detect or which can return the index of the key in ARR in order 1. I, I am assuming right now order 1. Okay, it can be any order, assuming order 1. So this whole algorithm becomes order 1. So anything which is working in non-deterministic, it gives you order 1, right? 0 1 knapsack में भी आप कर सकते हो सेम चीज, और चीजों में भी कर सकते हो कि भैया कैसे करना है। इट कैन बी नॉन डिटर्मिनिस्टिकली, वो आपको कांस्टेंट टाइम ही देगा। तो दिस इज अ मैजिकल थिंग। तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन क्या होती है, वो डिटरमाइन नहीं करती कि ट्रू है फॉल्स है क्या है सारी एल्गोरिथम में। वो क्या करता है, वो पूरा स्टेप अपने आप ही ले लेता है। इट्स लाइक अ क्वांटम मशीन, तुम्हें नहीं पता कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से या नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन से इन पॉलिनोमियल टाइम, देन दैट इज अ नॉन एनपी प्रॉब्लम। ठीक है, अब होता क्या है, देखो ये एनपी प्रॉब्लम्स है, इनमें से कुछ प्रॉब्लम मैंने पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर ली तो वो पी प्रॉब्लम आ गई। अब जो जो प्रॉब्लम इनमें से सॉल्व होती रहेंगी वो सारी पी में ढक 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 घुसती रहेगी, एनपी में नहीं घुसेगी। ठीक है, एनपी से हटती रहेगी और पी में आती रहेगी, तो पी बड़ा होता रहेगा, एनपी रहेगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो एनपी प्रॉब्लम्स है ये उस पे मैप हो सकती है। मैं एग्जांपल देता हूं। एक होती है हमारे पास सी एन एफ सेटिस्फाइबिलिटी। सी एन एफ इज कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। लेट से मुझे 3 वेरिएबल लेने हैं एक्स वाई जेड, तो मैंने किया एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड डॉट एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड। अब मुझे एक्स वाई जेड की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ट्रू हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड के लिए 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ऐसी कितनी यूज करनी पड़ेगी, 8। तो 3 वेरिएबल थे तो 2 to the power 3 एन वेरिएबल होते 2 to the power n, तो मुझे हर एक चेक करनी पड़ती 2 to the power n के लिए एन वेरिएबल्स में कि कौन सा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या होता, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो मेरे पास पहले इसमें मैं सेलेक्ट करता एक्स के लिए, क्या एक्स या तो 0 है या 1 है। फिर वाई के लिए, वाई या तो 0 है या 1 है, या अगर मैंने एक्स को 1 चुना है तो उसमें 0 या 1 है वाई। फिर जेड के लिए, जेड या 0 या 1 है, 0 या 1 है, 0 या 1 है, 0 या 1 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉसिबिलिटी आती है। इनमें से जो ट्रू होती है पता चल जाता कि ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अब आपको ये ट्री देख के कुछ 0 1 नैपसैक की भी याद आ रही होगी। या तो मैं एक आइटम ले सकता हूं या नहीं ले सकता, फिर अगला आइटम या तो लूंगा या नहीं लूंगा, लूंगा नहीं लूंगा, लूंगा नहीं लूंगा, इस तरीके से। तो 0 1 नैपसैक को मैं सीएनएफ सेटिस्फाइबिलिटी में डाल सकता हूँ, मैं और औरों को भी डाल सकता हूँ। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो जिसके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम मैप हो सकती है, यानी कि जितनी भी एनपी में प्रॉब्लम्स है वो सारी मैं मैप कर सकता हूं उसमें, तो वो कैटेगरी बनती है एनपी हार्ड की। तो दिस इज एनपी, ये इसका छोटा सा पार्ट पी, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें ऐड होती जा रही है, ये है एनपी हार्ड। दिस इज एनपी हार्ड, ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनपी आर मैप्ड। अब यू कैन सी
दैट कि मैंने यहाँ पे ना कुछ कवरेज लिया है। देखो एनपी हार्ड का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता अभी, ठीक है, मैप कर सकता हूं मैं उसमें, लेकिन कुछ एनपी हार्ड प्रॉब्लम ऐसी है, यानी कि उनपे सारी एनपी प्रॉब्लम भी मैप कर रही है और उनका मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन भी बता सकता हूं, तो वो यहाँ पे आ गई, जिनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन भी बता पा रहा हूं और वो एनपी हार्ड भी है, क्योंकि एनपी हार्ड इसलिए क्योंकि सारी एनपी उस पर मैप कर रही है और उनका नॉन डिटर्मिनिस्टिक सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है हमारी एनपी कंप्लीट। फॉर एग्जांपल सीएनएफ इज अ वेल नोन एनपी कंप्लीट, 01 नैपसैक इज अ एनपी कंप्लीट, राइट, दीज आर वेल नोन एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये चीज होती है पूरी पी एनपी एनपी हार्ड। अब यहाँ पे लड़ाई होती है वेदर पी इक्वल्स टू एनपी प्रूफ करने की या पी नॉट इक्वल्स टू एनपी प्रूफ करने की। देखो पी इक्वल्स टू एनपी प्रूफ करना है, एक एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम उठाओ या एनपी हार्ड प्रॉब्लम उठाओ, उसका पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन निकाल दो। ये सारी प्रॉब्लम्स उस प्रॉब्लम पे पॉलिनोमियल टाइम में मैं रिड्यूस करके उसका सॉल्यूशन लगा दूंगा, क्योंकि एनपी हार्ड प्रॉब्लम वही है जो एनपी से की सारी प्रॉब्लम जिस प्रॉब्लम पे मैप हो जाएगी इन पॉलिनोमियल टाइम। अगर पॉलिनोमियल टाइम में मैप हो रही है, मैंने पॉलिनोमियल टाइम में सारी प्रॉब्लम्स को उस पे मैप किया, फिर उसका सॉल्यूशन निकाल दिया पॉलिनोमियल टाइम में। तो अगर एक भी एनपी हार्ड या एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है पी पॉलिनोमियल टाइम में, तो पी इक्वल्स टू एनपी प्रूव हो जाएगा। और जैसे ही पी इक्वल्स टू एनपी प्रूव होगा, आपके सारे बैंक सर्वर सब चीजें हैक हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा भाई। बताता हूँ, देखो पी नॉट इक्वल्स टू एनपी, इसका मतलब कि अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर को बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करने में प्रॉब्लम को, ठीक है, एनपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन चाहिए इसके लिए। तो अगर आप ये प्रूफ कर देते हो पी नॉट इक्वल टू एनपी, $1 मिलियन का उठा लेना इनाम। अगर आप ये प्रूफ कर देते हो पी इक्वल्स टू एनपी, तो आपको $1 मिलियन का इनाम नहीं उठाना, हर महीने इन पूरे वर्ल्ड में जितने भी अकाउंट्स है, स्विट्जरलैंड वगैरह हर जगह, उससे अपने अकाउंट के अंदर एक एक रुपया ट्रांसफर कर लेना है हर महीने। एंड जितने भी अकाउंट्स है वर्ल्ड में, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आए, क्या क्यों आए तुम्हारे अकाउंट में, कैसे आए, ठीक है। और अपना तुरंत आईटी इनकम टैक्स वालों को का भी हैक करना और वहां से सारा डेटा उड़ा देना अपना, ठीक है। तो अपना डेटा उड़ा के अपने अकाउंट में डालो, उसे खर्च करो बढ़िया तरीके से और मजे लो जिंदगी के। $1 मिलियन का कुछ नहीं करना, फिर तुम बिलियनर बन जाओगे, हर दिन हर महीने बिलियनर बन जाओगे, और जितना मर्जी खर्च करो। बट प्रूविंग दिस इज नॉट अ सिंपल टास्क, doing this, because you have to take a no, np hard or np complete problem and then you have to solve it. Okay, so this is basically what is p, np, np complete, np hard, and what is the problem with p equals to np and p not equals to np. Our all the algorithms are working on this thing, that p is not equals to np. Now you see we are dealing with everyday quantum computers. When quantum computers are there, they can have multiple state at the same time. Now they are like a non-deterministic machine. ठीक है, अगर आप पढ़ोगे मैरोआना 1 के बारे में, जो अभी माइक्रोसॉफ्ट जिसको डेवलप किया है, जिसको उन्होंने एक सुपर क्वांटम मटेरियल बनाया है, इफ यू हैव रेड दैट, और उस मटेरियल से वो क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं जिसके अंदर क्वांटम चिप बनाई है जिसके अंदर 1 मिलियन क्यूबिट्स है। 1 मिलियन क्यूबिट्स मीन्स, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, 1 मिलियन इज 10 to the power 6, यानी कि जितनी देर में हमारा कंप्यूटर 1 ऑपरेशन करता है, वो कंप्यूटर 2 to the power 1 मिलियन ऑपरेशन कर सकता है। ये डिफरेंस है। जितनी देर में आपका फास्टेस्ट कंप्यूटर आज का 1 ऑपरेशन करेगा, इट कैन डू 2 to the power 1 मिलियन ऑपरेशन इन दैट टाइम। एक क्यूबिट मतलब 2 to the power 1, 2 क्यूबिट्स मीन्स 2 to the power 2, 3 क्यूबिट्स मीन्स 2 to the power 3, इतने ऑपरेशंस वो कर सकता है 8 टाइम फास्ट एंड। बट यहाँ पे उन्होंने पूरा खेल ही बदल दिया। नाउ इफ दे वांट, उनको चलाने में बहुत एनर्जी खर्च होगी, बट इफ दे वांट, दे कैन हैव एक्सेस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, दे कैन हैक एवरी सिंगल सिस्टम इफ दे रन दिस फॉर मेलिशियस पर्पस, राइट। यू कैन रीड अबाउट इट, मैरोआना 1 नाम है उसका। Okay, so this is it for today's class. We will have attendance now. This is the link. Okay, and I'm sending this link in chat as well if you are not able to access this directly, or direct link also I can send if there is a problem.
So please fill the form without filling the class code. I'll tell you the class code. Do not fill the class code. Do not fill the class code. Fill the form fast. Okay, so write down the class code without space, all caps. KM, sorry. KMPNP 102. KMP not Morris Pratt. NP is non-polynomial 102. कर दीजिए, there are 287 students, so I will close the form at 287 responses. 96 response, 132, 175, 211, 237, 54, 65, 87. I'm closing now. All the responses of the students have been marked. So, हाँ अजय बोलो, क्या हो गया? बोलो, आयुष बोलो, बोलिए जल्दी बोलिए। सर वो फॉर्म में वो भर नहीं पाया, अटेंडेंस नहीं कर पा रहे हैं। बेटा मैं क्या करूँ उसके अंदर, सबके फॉर्म भर गए, 287 बच्चे जितने भरे हैं वो कहाँ से आए? तुम लोगों ने बाहर लिंक भेज दिया, अब 274 बचे हैं यहाँ। जिन लोगों ने बाहर लिंक भेजा है उनसे एक बार पूछो तो सही कि क्यों भेजा है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि पहले अपना भर लो तुरंत, जल्दी। नहीं खुला था उसी टाइम पे यू शुड रेज योर हैंड कि सर अभी हमारा खुला ही नहीं है फॉर्म। मैं इसे 2 मिनट के लिए और खोल रहा हूँ, जल्दी भर के हटाइए इसे। यस अगर सर, यस 2 बच्चों का होते ही मैं बंद कर दूंगा। यस सर। भरिए जल्दी। 2 बच्चों का हो चुका है। हैव यू फिल्ड इट? नो सर। बेटा तुम रहने दो। 291 2 स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द फॉर्म नाउ। तुम लोग रहने दो, तुम्हारे बस की नहीं, अपने सीआर से बात कीजिएगा। तुमसे पहले तो जो बाहर बैठे हो वो भर के बैठ गए। हो गया सर। चलिए, थैंक यू।